महिलाओं को शिक्षित करने में अग्रसर महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था अंतर्गत कार्यरत कमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन की छात्राओं ने इस वर्ष भी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े सालाना पैकेजेस पर जॉब हासिल किए हैं। 30 से भी ज़्यादा कंपनियों ने प्लेसमेंट की पहल की थी, जिनमें सिटी टाटा टेक्नोलॉजीज, पेप्सिको, रॉकवेल ऑटोमेशन, वीज़ा, HSBC, अल्फा लावल जैसी नामांकित कंपनियां शामिल थीं। I'm currently placed in City Corporations with a package of 18 LPA. Talking about the opportunities we get in Cummins College, it's huge and it's in different numbers. Talking about the different opportunities we get in placement sector, the companies that have visited our campus, it's quite a huge number. In the recession period, it's a great success for our college. And talking about the training sessions that we get in our campus, it's huge because the different industry experts which come to us and they personally and individually help us in the different sectors. For example, the programming languages, core Java, Python, everything. Talking particularly about one of the MOUs that is signed with our college, which is HCL Technologies. They've also funded one of our labs, which is Artificial Intelligence and Machine Learning Lab, AIML Lab. And the infrastructure has helped us, and the way HCL has helped us in different certifications is also very enriching. It has actually motivated everyone to bang one of the best MNCs, and that's all. Talking about placements, it's all huge, but this is all that I can sum up. And I'm placed at KPIT. Basically, we all know that a recession is at peak right now, but that kept aside, still we have got the best opportunities in our college, and all thanks to our training and placement cells. Companies like PepsiCo, KPIT, Citibank, and all of that has came to our campus in spite of the recession. And what has helped us in all through this placement seasons was basically all the skill set that we learned in our college and placements journey. Companies like HCL, also Zensar, has MNUs signed with our college, which has helped us in gaining industrial knowledge, a lot of programming things. We have also had Kelkar Sir Session, who is an alumni of IIT Bombay, who helped us gain our confidence. Also, mock interviews were conducted. कमिंस कॉलेज इस साल भी लास्ट 2 इयर्स की इतनी लगभग 50 से प्लस अपॉर्चुनिटीज़ दिए है और 75% स्टूडेंट्स को जॉब मिला है। विशेषता ये है कि 10 लाख से ऊपर अराउंड 18 स्टूडेंट्स को जॉब मिला है। हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड इज़ 24 lakhs एंड द एवरेज इज़ 7.2 lakhs पर एनम। तो इस कॉलेज की खासियत एक है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर पैकेजेस इस कॉलेज का मेन USP है। जो भी स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं ऑल आर प्लेस्ड इन MNCs ओनली। कुछ कंपनीज़ का रिज़ल्ट आने से पहले ही उनका ज्वाइनिंग डेट आ चुका है। कॉलेज हैज़ 50+ MOUs फॉर इंटर्नशिप, इंडस्ट्री विजिट, प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड एक्सपर्ट सेशंस विच हेल्प अस स्टूडेंट्स लॉट फॉर टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री। आपल्या इथे मुलींसाठी ज्यांना शिक्षणाची आवड आहे पण घरच्या काही परिस्थितींमुळे ते आपलं शिक्षण घेऊ शकणार नाही, त्यासाठी मुलींसाठी अशा मुलींसाठी स्कॉलरशिपची व्यवस्था आपल्या इथे आहे। कमिन्स कंपनी आणि इतर मोठ्या मोठ्या कंपनी आणि काही दानशूर व्यक्ती आणि संस्था मुलींसाठी स्कॉलरशिप्स देतात। कमिन्स अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे ॲश्युअर करते की कुठलीही मुलगी पैशाअभावी स्त्री शिक्षणापासून वंचित राहिली नाही पाहिजे। मला सांगताना अत्यंत अभिमान वाटतो, आमच्या महाविद्यालयातील जवळपास सर्व मुलींना उत्कृष्ट प्लेसमेंट मिळाले आहे। समजा गेल्या वर्षीचं जर का आपल्याला सांगायचं झालं तर गेल्या वर्षी हायेस्ट पॅकेज हे जवळपास 19 लाखचं मिळालं आणि ॲव्हरेज पॅकेज सर्व मुलींचं जे प्लेसमेंट झालं त्याच्यामध्ये 12 लाखाच्या जवळपास होतं आणि जवळपास 80% मुली या 80% मुलींना प्लेसमेंट मिळालं।